Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to take a new topic and new concept rather, and that concept is related to speed and velocity. As we have already done, we have dealt here with the distance and displacement, and once you know the concept of distance and displacement, then dear students, it is very easy to deal here with the speed and velocity. But today's topic is mainly about speed and little bit I will talk about the velocity, but the main focus here on today's topic will be on speed. Hope you will enjoy, and this kinematics is very beautiful. In fact, physics is very interesting. Provided you know the fundamentals, you know the basic concepts, you should not take this to be as a burden. You should enjoy physics because physics is very interesting and very beautiful. But I will here come to my own point without wasting your time. My topic here is speed and velocity, and my main topic today will be on speed. So listen to me. See dear students, here I am writing मैंने बेटा यहाँ लिखा speed. What is speed? In short, I will write here speed. It is noted by V here, and this speed is nothing but it is the, in simple words I can write this as distance traveled by a body per unit time taken to travel that distance. Because time factor is very important there in kinematics, even in every term related to kinematics. So dear students, I have written here simply speed is defined as the distance traveled by a body, not displacement, because distance is a scalar quantity and speed is also a scalar quantity. That is why speed is defined in terms of distance, not in terms of displacement, but velocity is defined in terms of displacement, because displacement is a vector quantity and velocity is a vector quantity. So what is speed here? It is defined as the distance traveled by a body, distance traveled by a body per unit time taken to travel that distance. See dear students, speed here is a scalar quantity. As distance is a scalar quantity, so speed here is a scalar quantity. Speed is a scalar quantity. What does it mean, my dear students? That means it has only magnitude but no direction. Speeds can be added, speeds can be subtracted, or these speeds can be multiplied by using simple laws of algebra. We don't have to go here with the concept of vectors. We don't have to go here with the treatment of vectors, because speed is a scalar quantity. So that is why it is easy as compared to the concept of velocity, which is a vector. So dear students, I hope that you have got this. So it is a scalar quantity. Now SI unit of speed is, dear students, because V is equal to S by T, that means meter per second is the SI unit of speed, and that comes out to be as meter second. When we take it, the plus power becomes minus power. बेटा जब ऊपर ले जाएंगे इसको, तो मैं जो इसका प्लस पावर है वो ऊपर नीचे
जब ऊपर लेंगे इसको तो माइनस पावर बनेगा, तो मीटर पर सेकंड इज SI यूनिट ऑफ स्पीड. नाउ सी माय डियर, speed may be positive or zero, but never negative. How? Now the question arises, sir, please throw light on this. How speed may be positive or how speed may be zero? Please throw light on this concept. See, dear students, as we know, distance is always positive because speed is equal to distance by time. As we know that speed is always positive for a moving particle, but distance is zero for a particle which is at rest. Thus, accordingly, when distance is positive, then at that time speed of the particle is positive. But when distance is zero, that is when particle is at rest, then at that time speed is taken to be as zero. But speed is never negative, as speed is a scalar quantity. It has only magnitude but no direction. Here direction is due to the, it has no direction. Here negative is due to the direction. That is why dear students, मैंने बेटा यहाँ लिखा सिर्फ क्यों पॉजिटिव, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये जीरो है किस पार्टिकल के लिए, जो पार्टिकल रेस्ट में हो, और इसलिए बेटा मैंने ये नेगेटिव नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है बेटा नेगेटिव? बिकॉज it has only magnitude. Negative positive is due to direction because it is a scalar quantity, so it is not negative. That is why it may be positive or zero but never negative. Hope you have got this. Now the next concept here is like this. Speed is always, the third point here is speed is always greater than or equal to the magnitude of speed is always greater than the magnitude of velocity. Main focus here on this topic is, dear students, on speed, but little bit there will be involvement of velocity because speed and velocity go side by side. See, dear students, बेटा आप देखते जाएगा यहाँ स्पीड का मैग्नीट्यूड जो होता है that is greater than or equal to the magnitude of velocity. As we have read, dear students, that magnitude of distance is always greater than or equal to the magnitude of displacement. If we divide time on both sides, dividing both sides by time, बताइए बेटे ये किसके बराबर आएगा? See, dear students, dividing both sides by time, so this will come out to be as here speed, magnitude of speed, but dear students, this will come out to be as magnitude of velocity. That is why here, so here is like this. That is why magnitude of speed is no vector over it because velocity is a vector quantity. So here the very beautiful point is that the magnitude of speed is either equal to the magnitude of velocity or it may be greater than the magnitude of velocity, because we know that the magnitude of distance is greater than or equal to the magnitude of displacement. Hope you have got this point. Now the next point that I am going to discuss here is like this. In fact, I will discuss more light and I will compare speed with the velocity, and once I will here take the concept of velocity, but today's topic is mainly on speed. That is why I will discuss here the speed and its types, because today's topic is wholly and solely about speed. So see my dear students, speed क्या होती है? What is speed? Speed is actually, dear students, distance by time. See, please keep attention here. बेटे यहां देखिएगा और समझने की कोशिश करो. यहां अगर कोई पार्टिकल
कम वक्त में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर कोई पार्टिकल, सपोज कोई पार्टिकल यहां चल रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस, इसका मतलब है कि इसकी स्पीड ज्यादा है, वो तेज रफ्तार से चलता है। इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज फास्टर। व्हाई? क्योंकि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कम अगर ये होगा टाइम तो स्पीड ज्यादा, अगर डिस्टेंस ज्यादा तो ये ज्यादा। अगर कोई चीज कम वक्त में ज्यादा फासला तय करेगी तो इस वक्त बेटा इस पार्टिकल की स्पीड ज्यादा है। लेकिन अगर ये लिखेंगे बेटा, थोड़ा समझने की कोशिश करो, अगर मैं स्पीड लिखूंगा यही डिस्टेंस बाय टाइम, वेरी इजी। अगर मैं लिखूंगा कि अगर किसी पार्टिकल ने ज्यादा वक्त में कम डिस्टेंस किया, तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड जो है ना पार्टिकल की वो स्लोअर है, वो आहिस्ता चल रहा है पार्टिकल। क्योंकि अगर टाइम ज्यादा हुआ तो स्पीड हुई कम, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया तो स्पीड यहाँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये कम और ये स्पीड क्या हो गई, कम। होप यू हैव गॉट द कांसेप्ट ऑफ दिस। नाउ I will proceed towards the types of speeds. See, dear students, now dear students, types of speeds. Types, here it is types. The first type that I will discuss here is uniform speed. बेटा मैं यहां डिस्कस करूंगा यूनिफॉर्म स्पीड, और इसके बाद जो दूसरे नंबर पर है यहां, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। और बेटा इसके बाद यहां डिस्कस करूंगा एवरेज स्पीड। और इसके बाद करूंगा दैट इज फोर्थ टाइप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। So here the different types of speeds that we have to deal here with, that we have to study here, is first of all that is uniform speed, and after that there is non-uniform speed, and then average speed, and finally last but not least and most important is instantaneous speed. See dear my students, now first of all I will discuss here, बेटा मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, क्या डिस्कस करूंगा यहाँ, पहले यूनिफॉर्म स्पीड, और इसके बाद आई विल डिस्कस दीज वन बाय वन, एंड आई विल डील हियर विद द न्यूमेरिकल्स related to average speed and instantaneous speed, so as to get clarity about the types of speeds. See my dear, now first of all I am going to deal here with the uniform speed. What is uniform speed? But keep in mind, I am here dealing with the body in motion, but in a straight line, and that motion is known as one-dimensional motion. If only one coordinate changes with respect to the time, that is in a particular direction along x-axis, then such type of motion is known as one-dimensional motion, or simply we can say motion in a straight line. Uniform speed क्या है बेटा, देखिए, let's take here to be as a point O, let this is origin, and where let's take the body starts from this point and goes along x-axis in a straight line. If the body goes from, it covers, suppose it covers like this, in first hour it covers a distance of 10 kilometers, and in the second hour it again covers a distance of 10 kilometers, and in the third consecutive hour, it again covers a distance of 10 kilometers. But along a straight line, then such type of motion is said to be as, we can say that the body is at that time in uniform speed.
अगर पहले घंटे में किसी ऑब्जेक्ट ने 10 किलोमीटर तय किए और दूसरे घंटे में भी कितना तय किया, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और बेटा तीसरे घंटे में भी उन्होंने ट्रेवल किया 10 किलोमीटर, बट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, then at a time when the body covers and travels equal distances in equal intervals of time, then at that time the body is said to be having uniform speed. So it is obvious here, when a body travels, write down these things. Beta ye note kijiyega, it is very easy, but write down the things, that is very good for you as well as for me. When a body travels equal distances in equal intervals of time, then the body at that time is said to be in, बिकॉज मैंने बेटे यहाँ डिस्टेंस ले लिया, क्योंकि स्पीड की जो डेफिनेशन है वो कहाँ से जनरेट हो रही है, डिस्टेंस से हो रही है, न कि डिस्प्लेसमेंट से. When a body travels equal distances in equal intervals of time, then the body is said to be having uniform speed. And such type of motion is known as uniform speed. Now the second case that I am going to discuss here is non-uniform speed. Second type here is non-uniform speed. See my dear, what is non-uniform speed? It is like this. When a body covers equal distances in unequal intervals of time or unequal distances in equal intervals of time. See my dear, it has two cases. First case is like this. When a body covers equal distances in unequal intervals of time. In unequal intervals of time, then the body is said to be in non-uniform speed. This is the first case. Here beta kya le liya? Because numericals will go accordingly. Here first case is when a body covers equal distances but in unequal intervals of time, then the body is said to be in non-uniform speed. I will explain this thing here, but first of all I will write this. Second case, देखो बेटा क्या है, when a body covers, दूसरा केस क्या है, unequal, यहां लिखा है equal distances, आप लिखूंगा यहां बेटा unequal distances, but in बेटा पहले केस में लिखा था अनइक्वल, लेकिन दूसरे केस में वहां यहां लिखेंगे equal intervals of time. Then also at that time in equal intervals of time, also this is beta case of non-uniform speed. So what is non-uniform speed? A body is said to be in non-uniform speed if it covers equal distances, keep in mind, in unequal intervals of time, or if it covers unequal, equal के बदले यहाँ unequal distances and unequal के बदले यहाँ equal intervals of time. So here are two cases why I am writing this. It happens to be as very easy, but when we deal with the numericals, it takes a U-shape here, no, it takes a U-turn there rather, but once you know the concepts of these, you will read these very seriously, very intensively, then I think it is not difficult to solve the numericals. I have so many times seen the numericals related to these two concepts. There is involvement of two concepts. I will here, inshallah, I will solve these numericals meantime here.
to get the clarity about this, what this is and what is the meaning of this and what is the meaning of this, because mathematics will go accordingly, and here the numerical the mathematics that is involved there in the numericals will go accordingly. See here. तो ये क्या है बेटा, ऐसे है ये, अगर कोई यहाँ गाड़ी चलेगी, suppose a body is moving here starting from point O, for let us take for sake of convenience, and in the first hour it travels a distance of 2 kilometers, but in the second hour it travels a distance of 5 kilometer. यहाँ बेटा तेज चल रही है, यहाँ थोड़ा स्लो चल रही है। तो पहले घंटे में 2 किलोमीटर किए, लेकिन दूसरे घंटे में कितने किए? 5 किलोमीटर। नहीं सॉरी बेटे, यहां लेंगे अगर 2 किलोमीटर, क्योंकि मैंने पहला केस लिखा इक्वल डिस्टेंसेस, तो 2 किलोमीटर जो दूसरे, लेकिन यहां लगा टाइम ज्यादा ही, उनने 2 घंटे में किया। फर्स्ट डिस्टेंस, फर्स्ट डिस्टेंस जो है ना, इंटरवल ऑफ डिस्टेंस दैट इज कवर्ड इन 1 आवर, बट सेकंड डिस्टेंस is covered in 2 hours, so equal distances in unequal intervals of time. And again I am taking 2 kilometers, but let's for sake of it takes here 5 hours. And when body moves in such a fashion that at that time we can say that the body is in non-uniform speed, our body is having non-uniform speed, equal distances but in unequal intervals of time. And that is the case of non-uniform speed. The other cases, this is the first case that I have little bit explained here, and now the second, what is the second case here? See dear students, तो बेटा दूसरा केस क्या है? Equal. Now second case is unequal distances in equal intervals of time. See dear students, let us take here again a straight line. Let the body start from point O. Let I am taking this to be as 1 kilometer, and this 1 kilometer is traveled in 3 hours. पहला किलोमीटर जो है ना बेटा, उन्हें 3 घंटे लग गए पहले किलोमीटर को तय करने में, ट्रैवल करने में। अगर मैं लूंगा यहाँ अनइक्वल डिस्टेंसेस, तो मैं यहाँ लूंगा बेटा यहां से यहां तक, मान लीजिए यहां से यहां तक 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, लेकिन इसको भी कितनी घंटे लग गए? 3 घंटे लग गए। पहले किलोमीटर ट्रैवल करने में 3 घंटे, दूसरे 2 किलोमीटर ट्रैवल करने में 3 घंटे लग गए। दैट इज अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये इसको भी क्या कहेंगे बेटा? दैट इज ऑल्सो नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, बट हियर unequal distances in equal intervals of time, but in first case equal distances in unequal intervals of time. अगर मैं अगेन बेटा लूंगा यहाँ, सपोज और यहाँ खाली में लूंगा यहाँ 0.5 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर, एंड लेट अस सपोज दिस इज ट्रैवल्ड इन 6 आवर्स। बहुत आहिस्ता चल रही है यहाँ गाड़ी, बहुत रुक रुक के चल रही है यहाँ। Sorry, not again it is traveled in how many hours, because we have to take time same 3 hours. Unequal distances in equal intervals of time, then at that time we can say again that the body is in non-uniform speed. So I hope that you have got this. Now why I am doing this? This is very very handy when we do the numericals related to average speed. देखो बेटे ये बहुत आसान लग रहा है, यहाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं लग रहा है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जब हम न्यूमेरिकल्स के साथ डील करेंगे, फिर देखना कि ये वहां थोड़ा टफ लग रहा है। क्यों टफ लग रहा है? क्योंकि बच्चे होते हैं ना, वो इन चीजों को इजी लेते हैं। Don't take things easy. Take even minute and petty things that seems to be as minute and petty. There is nothing in the world that is petty and minute. Take the things very serious, and inshallah you will do the complicated numericals related to non-uniform speed. Hope you have got this question. Now next that I am taking here is average speed. Third type here is average speed. What is average speed, dear students? आप सीधे याद रखो एवरेज स्पीड के लिए बेटा, ये लिखेंगे B और यहाँ थोड़ा लिखेंगे A एवरेज,
तो सीधे लिखना टोटल। जब भी आप देखोगे ना एवरेज स्पीड, तो पहले टोटल लिखना, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में टोटल डिस्टेंस है और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। याद रखो बेटा, क्या मैंने लिखा यहाँ आसान है, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए जब न्यूमेरिकल करेंगे तो टफ लगता है। लेकिन अगर आप यहाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स, so you should have a strong hold on concepts. Don't take things serious and don't take things easy, take the things serious. Sorry. तो बेटा क्या लिखा, एवरेज स्पीड किसके बारे में, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। टोटल ऊपर में भी लिखना और टोटल नीचे में भी लिखना, डिनोमिनेटर में भी लिखना। सी डियर स्टूडेंट्स, तो मैं लिखूंगा यहाँ वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। नो यहां बेटा दो केसेस हो सकते हैं। ये वी एवरेज किसकी निकालेंगे, वी एवरेज किसी चीज की वी एवरेज निकालते हैं ना, किसी चीज की एवरेज जब कोई चीज नॉन यूनिफॉर्म हो। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जब बॉडी व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम or unequal distances in equal intervals of time, we can say at that time the body is in non-uniform speed, and when the body is traveling in non-uniform speed, at that time there is need of finding the average speed. When is the need of average speed? The need of average speed is when the body is in non-uniform speed. बेटे ऐसे है कि अगर कोई किसी की रेट कांस्टेंट है, सपोज I am taking here, my income is 60,000 पर मेरी जो इनकम है ना बेटा वो 60,000 है एक महीने में। इसका मतलब है कि हर दिन मेरी जो आमदनी है, इनकम है, वो 2,000 है। तो मुझे एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हर दिन में मेरी जो आमदनी है ना, मेरी आमदनी जो इनकम है वो टोटल रुपीज, टोटल इनकम बाय टोटल डेज। लेकिन पर डे मेरी रेट क्या है, एवरेज क्या है, एवरेज पर डे दैट इज 60,000 बाय 30। तो बेटे ये आएगा ना 60,000 हियर वन मोर, तो ये आएगा 2,000। तो मुझे रेट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर दिन मेरा जो है ना, सरकार ने जो, मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूं, तो हर रोज हमको यहाँ 2,000 मिलते हैं। तो नो नीड ऑफ फाइंडिंग एवरेज ऑफ दिस थिंग। बट एवरेज किसकी निकालेंगे, अगर कोई बिजनेसमैन है, एक दिन कमाता है 2,000, दूसरे दिन कमाता है 5,000 और चौथे दिन कुछ नहीं कमाता है, लॉकडाउन में बिल्कुल घर में बैठा हुआ है, तो बेटे इस सूरत में क्या है, इस सूरत में इनकम, एवरेज इनकम किसी को कहेंगे, अरे हमको बता एवरेज इनकम क्या है। हमें ये नहीं चाहिए कि आप एक दिन कमाते हो 20,000, दूसरे दिन कुछ भी नहीं, लॉकडाउन में बिल्कुल कुछ नहीं। तो हम इसकी क्या निकालते हैं, हम टोटल इनकम, हर दिन की इनकम, सपोज एक दिन में 20,000, दूसरे दिन में कुछ भी नहीं, तीसरे दिन में 5,000, और फिर एक मंथ में टोटल डेज यानी 30 डेज करते हैं, तो हम इसकी एवरेज निकालते हैं। कब बेटा एवरेज निकालते हैं, जब किसी की नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो। यहाँ बेटा इनकम नहीं लिखना है, यहाँ ऊपर लिखना है डिस्टेंस इनकम के बजाय, और डे के बजाय बेटा यहाँ लिखना है टोटल टाइम। होप यू हैव गॉट दिस। तो एवरेज किसकी निकालनी होती है, जो चीज नॉन यूनिफॉर्म हो। जो यूनिफॉर्म हो इसकी एवरेज भी वही है जो इसको हर दिन कमाने की रेट होती है। देखो तमाशा, सी माय डियर स्टूडेंट्स, see now there are two cases for finding the average velocity. Now the first case here is when a body travels equal distances in unequal intervals of time, and the next case is when the body travels unequal distances in equal intervals of time. इसके लिए निकालेंगे average speed। फर्स्ट केस average speed निकालनी है बेटा। थर्ड टाइप एवरेज स्पीड बेटा ऐसे निकालेंगे। देखो क्या है बेटा, सपोज एक बॉडी चल रही है, लेकिन किसके लिए, व्हेन बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये पहला केस है, दैट इज केस फर्स्ट, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का केस फर्स्ट। इसी की निकालेंगे
एवरेज स्पीड। देखो बेटा क्या है, सपोज ए बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ओ, इट गोज along x axis and travels, let it travels distance s1 during time t1 and travels s2 during time t2 and travels s3 during time t3 and so on up to infinity. I am taking here three intervals. Suppose a body starts from O and goes along x-axis, travels S1 during time t1, S2 during time t2 and S3 distance during time t3. Therefore बेटा इसके लिए एवरेज क्या है, बी एवरेज क्या है, मैंने पहले ही कहा लिखा है कि आप टोटल निकालो, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डैश डैश एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय बेटा क्या करेंगे, T1 टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश डैश एंड सो ऑन। देयरफॉर बेटा मैं लिखूंगा यहाँ V एवरेज इज इक्वल टू, यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, चलो हम लिखेंगे खाली दो इंटरवल के लिए, फिर that will, if we will do this for two intervals then we can do this for number of intervals. तो बेटा मैं लिखूंगा यहाँ सीधे S1 प्लस S2 प्लस डैश डैश लिखूंगा, तीसरा इंटरवल नहीं लिखूंगा क्योंकि जो दो इंटरवल में आएगा वो तीसरे चौथे और पांचवें इंटरवल में भी ऐसे ही आएगा, ऐसे ही चलेगा ये सिलसिला। डिवाइडेड बाय बेटा ये T1 प्लस T2 प्लस T3, सॉरी T3 नहीं लिखेंगे, खाली दो लिखेंगे, तो T2 प्लस डैश डैश लिखेंगे। सी माय डियर, अब मैंने क्या लिखा, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो बेटा यहाँ डिस्टेंस इक्वल लेना है, distance. So there is given something, we have to take this towards the known things, because I have here known thing is equal distance, because this is given equal distance, but time is not given, it is unequal intervals of time. So we have to convert here time into distance. See, this happens to be very easy, this is not so easy. You should have a sound technique for this. See dear students, unequal intervals of time, this is known, because equal means it is given, it is known, but time is not known. We have to convert this unknown time into known. So what for that, what I can do here, dear students, we know v1, that is speed is equal to distance by time, v2 is equal to s2 by t2, but we have to convert time here into distance, because equal distance, डिस्टेंस के साथ कुछ मत करो क्योंकि ये दिया गया है, लेकिन टाइम को चेंज करो, किसमें, डिस्टेंस में, क्योंकि डिस्टेंस इज नोन बट टाइम इज अननोन। द टेक्निक इन फिजिक्स इज दैट यू हैव टू सॉल्व अननोन व्हिच इज नॉट नोन इन टर्म्स ऑफ नोन, दैट इज टेक्निक हियर। तो बेटा ये क्या आएगा, यहाँ T1 को यहाँ ले जाओ और यहाँ नीचे वाला ऊपर जाएगा, लेकिन बेटा यहाँ ऊपर वाला नीचे जाएगा V1, और बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ T2 यहाँ जाएगा बेटा, T2 इज इक्वल टू ये V2 यहाँ S2 है लेकिन ये नीचे जाएगा। देखो बेटा T1 यहाँ और V1 यहाँ, तो यहाँ S1 T1 इज इक्वल टू S1 बाई V1, यहाँ T2 क्या निकलेगा, क्योंकि T2 को यहाँ खत्म करना है, T2 हमको पता नहीं है ना, इसको कन्वर्ट करना है S2 में, तो T2 क्या है बेटा, S2 बाई V2। लेट अस इन दिस इंटरवल, लेट अस टेक हियर बेटा, यहाँ इस इंटरवल में स्पीड है V1 क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, तो इस इंटरवल में V2 और इसमें V3, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मींस ये सेम नहीं है। तो लेट अस हियर इज V1, इस इंटरवल में कितनी स्पीड है बेटा, V1, इसमें कितनी है V2 और इसमें कितनी है V3, ये मैंने सपोज किया है बेटा। तो अब क्या करेंगे बेटा, देयरफॉर एवरेज, V एवरेज किसके बराबर आएगा, V एवरेज, तो S1 को ऐसे लिखेंगे S1, बट S1 इज हियर, देखो पहले लिखेंगे S1, लेट्स टेक हियर S1, आफ्टर दैट आई विल राइट दिस, S1 प्लस S2 प्लस डैश 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 डिवाइड बाय T1 किसके बराबर आएगा, T1, क्योंकि T1 को चेंज करो डिस्टेंस में, तो ये T1 किसके बराबर आएगा बेटा, यहाँ S1 बाई V1 प्लस बेटा यहाँ S2 बाई V2 प्लस डैश 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 एंड सो ऑन। Now what is our case? Since it is given that equal distance means let's take S1 is equal to S2 is equal to S, let us see, because ये दिया गया है ना given, तो जब S1 equal to S2 equal intervals of distances, तो मैंने S1 is equal to S2 is equal to S ले लिया, S let us see it is equal to S, तो बेटा therefore V average किसके बराबर आएगी, V average here इस S1 के बदले बेटा S लिखो और बेटे S2 के बदले S, आप ये छोड़ देंगे, जो दो इंटरवल में निकलेगा ना वही निकलेगा, तीन इंटरवल में सो ऑन ऐसे ही निकलेगा, वही नहीं निकलेगा लेकिन ऐसे ही निकलेगा। देखो बेटा क्या करेंगे यहाँ, सी माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज कीप अटेंशन हियर एंड राइट डाउन दीज थिंग्स।
तो बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ S1 के बदले S बाई V1 प्लस यहाँ बेटा S2 के बदले लिखेंगे S बाई V2. सो आई हैव कन्वर्टेड दिस इनटू S बिकॉज ये S क्योंकि यहाँ S है, यहाँ S है, S बिकॉज इक्वल डिस्टेंस. सो द प्रॉब्लम इज वी आर गोइंग वेरी क्लोज टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सी माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या बनेगा यहाँ बेटा, देयरफॉर V एवरेज इज इक्वल टू S प्लस S किसके बराबर आएगा बेटा 2S. तो यहाँ S कॉमन निकलेगा, S यहाँ कॉमन S बेटा यहाँ क्या है 1 बाई V1 प्लस यहाँ रहेगा बेटा 1 बाई V2. देखो बेटा क्या ये ऊपर और नीचे में S कैंसिल हो जाएगा, तो किसके बराबर आएगा बताइए, S V एवरेज किसके बराबर आएगा. देयरफॉर बेटा V एवरेज आएगा बराबर 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2. ये एक्सप्रेशन है किसके लिए बेटा, एवरेज वेलोसिटी के लिए. लेकिन कब, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. अगर पहले इंटरवल में स्पीड V1 है और दूसरे इंटरवल में स्पीड कितनी है V2. तो होप विद दिस आई कंक्लूड माय टॉपिक. इंशाल्लाह आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम. तो सी डियर स्टूडेंट्स, हियर V एवरेज कम्स टू बी एज 2V. यहाँ बेटा ये आएगा, यहाँ ऐसे आएगा V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2. ये याद कीजिएगा मेहरबानी करके. बिकॉज डियर स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू कंक्लूड माय टॉपिक बिकॉज लाइट हैज, हाँ जो बिजली है वो चली गई. ओके, विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक. ओके.